Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum, all the viewers, and I welcome all of you on this important session with my panelists. And we are very lucky that we have two very experienced and deep knowledge with the glaucoma. So we will talk about the glaucoma today. And I have with myself Dr. Karim Damji and Dr. Professor Salim Meher. Dr. Karim Damji is our chair of the Department of Ophthalmology and Visual Sciences, and Dr. Meher is our vice chair for academics, and I am Dr. Shaukat Ali Chipa, assistant professor here in Aga Khan Hospital. तो आज हम जो बात करेंगे वो है हमारा मौजू आंखों से मुतल्लिक और आंखों की एक बहुत अहम बीमारी के बारे में हम आज बात करेंगे जो कि है ग्लोकोमा, जिसको उर्दू में काला पानी भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी बीमारियों के बारे में आगाही के दिन मनाए जाते हैं, लेकिन ये शायद इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए एक दिन नहीं बल्कि पूरा एक हफ्ता रखा गया है इसकी आगाही के बारे में, ताकि लोग इसके बारे में जान सकें। क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये खामोश चोर है नज़र का, तो ये हमारी नज़र को हल्के हल्के मुतासिर करता है। तो इसका जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस बीमारी से अपने आप को, अपने जो भी हमारे करीब के लोग हैं, हम उनको इस नज़र की ख़राबी से बचा सकें। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि डॉक्टर मेहर साहब से रिक्वेस्ट करूँ कि वो जो है हमें ग्लोकोमा के बारे में कुछ बुनियादी बातें बताएं। डॉक्टर मेहर प्लीज़। ओके, शौकत बहुत शुक्रिया। ग्लूकोमा, जिसको अभी शौकत ने कहा कि काला पानी या काला मोतिया कहते हैं, ये वो बीमारी है जिसमें आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। तो नॉर्मली आंख का दबाव होता है, जैसे आपके खून की शरीयानों में खून दौड़ता है तो उसका प्रेशर होता है, इसी तरह आंख जो होता है उसमें पानी होता है तो उसका प्रेशर होता है। ये प्रेशर नॉर्मली जो होता है वो 10 से लेकर 21 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक होता है। जब ये प्रेशर नॉर्मल से ऊपर चला जाता है, क्यों? क्योंकि एक तरफ से पानी बनता है, प्रेशर मेंटेन होता है, फिर दूसरी एग्जिट से पानी निकल जाता है। ग्लूकोमा में होता यह है कि जो एग्जिट साइज है वो बिल्कुल बंद हो जाती है, तो जो पानी आंख में बनता है वो नहीं बाहर जाता, इस वजह से उसका प्रेशर, उसका दबाव आंख के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब ये प्रेशर बढ़ता है तो आंख के पीछे जो रग है, जिसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, जिसका ताल्लुक हमारी विजन से है, ये प्रेशर उस पर जोर लगाता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको खराब करता है। इस वजह से हमारी जो विजन है वो स्लोली और ग्रेजुअली कम होना शुरू होती है। जो शौकत साहब ने कहा कि ये साइलेंट थीफ है, पहले जब डिजीज शुरू होती है ना तो इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते। इसमें जो नॉर्मली ओपन एंगल ग्लूकोमा जिसको हम कहते हैं, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते। पेशेंट को नहीं पता चलता कि उसकी विजन स्लोली एंड ग्रेजुअली जा रही है। वो समझता है कि आप 60 साल के हैं, आपको सफ़ेद मोतिया है, आपको कैटरेक्ट है, आप डॉक्टर के पास जाएं, उसको कहें जी मुझे तो कैटरेक्ट है, इसको निकाल दें। और आपको हैरानगी होती है जब डॉक्टर उनको बताता है कि जी आपको तो ग्लूकोमा है और आपकी ये विजन जो है क्वार्टर हाफ जो है वो जा चुकी है। तो इस वजह से ना दैट मेक्स दिस डिजीज वेरी वेरी सिनिस्टर, कि ग्लूकोमा जो है इज अ डेंजरस डिजीज, क्योंकि अर्ली स्टेज में उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते। शौकत जी, तो आपने ये बताया कि जो आंख में पानी बनता है ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, जो कि एक पानी आंख के अंदर होना ज़रूरी है ताकि आंख का एक मखसूस प्रेशर कायम रहे। तो कुछ लोगों के जहन में ये होता है कि काला पानी शायद कोई नया पानी आंख के अंदर आ गया, तो ऐसा नहीं है। आपने बताया कि नॉर्मल पानी है जो कि आंख में होता है, जो कि होना भी ज़रूरी है, लेकिन एक हद तक उसको होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। सही है, जी ठीक है। अब मैं करीम दाम जी से आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोकोमा and do they differ in terms of symptoms and treatment? Yeah, assalamu alaikum and bahut shukriya, Dr. Shaukat. It's a pleasure for me to be here, and I'm going to explain a little bit more because I think the question is important. So glaucoma is basically the condition Dr. Meher described, where the nerve gets damaged in the back of the eye. And think about a camera connected to a computer with a cable, and if that cable is not good, then the computer will not get a good image. So that's the problem in the anka nasene that gets damaged. Now, the thing is that this can happen at any age, but it is frequently happening in children as well as in adults. If it happens in a child, the child will have eyes that appear bulging and very prominent,
and the cornea, the clear part, may be cloudy. The child may be sensitive to light or have a lot of tearing. So those are some of the features of congenital glaucoma, we call it. And that type of glaucoma needs quick attention and usually surgery. Drops will not be enough. Then later in life, you can have glaucoma that is usually in adults, and that is age-related, primary open angle, but other types that we can discuss. And that type can be managed with laser treatment, something called SLT that we will discuss, or drops, or sometimes surgery. So, it is frequent at any age, but usually in the beginning of life or later in life. Thank you very much for highlighting the types of glaucoma. Now, Dr. Meher, how is glaucoma diagnosed and what are the key indicators that clinicians look for? मतलब ये कि ग्लूकोमा को किस तरह तशखीस किया जाएगा और जो तबीब है या जो डॉक्टर है वो उसके अंदर मरीज की आंख में क्या क्या निशानियां देखे जिससे उसको अंदाजा हो सके कि इनको काला पानी है, ग्लूकोमा है। तो पहली बात है जो हम सब कर रहे हैं वो आई का प्रेशर है। जैसे नॉर्मल हमने आपको रेंज बताई कि 10 से 20-21 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। तो पहली बात तो यह है कि हम आपका मशीन पे माइक्रोस्कोप पे आई का प्रेशर चेक करते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ज़्यादा होता है। और फिर हम आपकी आंख के पीछे जो ऑप्टिक नर्व है उसको देखते हैं, क्योंकि ये प्रेशर उसको डैमेज करता है। तो जो डैमेज की साइन है उसको हम अपनी ज़बान में कपिंग कहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो न्यूरो रेटिनल रिम है वो आस्ते आस्ते थिन होनी शुरू करती है। तो दिस इज द साइन कि हम जब देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये प्रेशर जो है आंख के पीछे रग को नुकसान पहुंचा रहा है। पेशेंट की विजन चेक करते हैं जो इफेक्टेड होती है, कभी कभी पेशेंट की कलर विजन भी इफेक्ट होती है। उसके बाद हमारे पास बहुत ही ज़्यादा स्कैन्स होते हैं जो हमें बताता है कि आपको ग्लूकोमा किस स्टेज पे है। विजुअल फील्ड्स होती हैं, दीज आर वेरी सॉफ्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशन जो हमारी हॉस्पिटल में है, और हम उनसे आपको बता सकते हैं कि नंबर 1 आपको ग्लूकोमा है, नंबर 2 आपको ग्लूकोमा से कितना डैमेज हुआ है, ठीक है ना। तो हम ग्लूकोमा को कहते हैं कि आप अर्ली स्टेज में हैं, आप मीडियम मिडिल स्टेज में हैं, या आप एडवांस स्टेज में हैं, ठीक है। और उस हिसाब से हम आपको डायग्नोसिस करके बताते हैं। Dr. Shokat, Yeah. I want to just add something to the question you were asking about types and symptoms, because I think it's important for the public to know that diabetes, for example, can be associated with growth of new blood vessels inside the eye, and that is called neovascular glaucoma. And there is often pain and redness and swelling inside the eye. So that is a type called secondary glaucoma. So the primary open angle is usually not having any symptoms, but the secondary types, like this one associated with diabetes, neovascular glaucoma, can be quite painful and difficult. And that treatment is different. It's not only drops or surgery, but also laser injections to reduce the blood vessels and swelling. Then you can have types of glaucoma called angle closure, where the lens, cataract, motia may be a problem, and then the lens needs to be removed. And that type of glaucoma can present with blurred vision, seeing halos around lights, a headache around the eye, redness of the eye. Sometimes the pupil is dilated slightly. So it's a different type of glaucoma. Similarly, some people with arthritis or other skin problems, etc., can get inflammation in the eye, called uveitis or iritis, and that can present with pain, light sensitivity, redness. Again, the treatment is different. It is not only lowering the pressure, one has to address and attack the underlying problem in order to deal with it intelligently. So when people are being seen for glaucoma, I think it's good that they ask, what type of glaucoma do I have? Is it primary or secondary? And yes, we can lower the pressure as part of the treatment, but do I need any other type of treatment also? थैंक यू डॉक्टर दाम जी। तो डॉक्टर दाम जी ने जो हमें ये बताया कि जो ग्लूकोमा है इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और उसमें जो है एक होता है प्राइमरी, जिसमें हमें शायद वजह इतनी पता नहीं होती। उसमें भी 2 टाइप का होता है, जिसमें एक में वजह पता चलती है कि लेंस का साइज बड़ा हो रहा है या आंख के अंदर एंगल क्लोज हो रहा है, जहाँ पानी गुजरने का रास्ता है वो क्लोज हो रहा है, जिसकी वजह से हो रहा है। और उन्होंने एक बहुत हमें ज्यादा अहम बात ये बताई कि और भी दूसरी बीमारियों की वजह से भी बाज़ औक़ात ग्लूकोमा
हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हर शख्स को, जिसको भी ग्लोकोमा हो, उसको ये पता होना चाहिए कि मेरा ग्लोकोमा जो है वो किस टाइप का है और मुझे किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो जनरल ट्रीटमेंट नहीं होता, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी होता है। ठीक है ना डॉक्टर धाम जी? फर्दर आई विल आस्क यू that there are any advancement in the screening techniques that are making diagnosis more accurate or accessible? Yeah, Dr. Mayer referred to some of them, but basically in glaucoma, we are looking at the structure of the optic nerve in the back of the eye and then the function of the eye. Now, to look at the structure, we can look inside the eye with some special lenses and lights, and experienced doctors can tell you, is there glaucoma or no glaucoma based on the nerve appearance. But then there's also technology called OCT, optical coherence tomography, OCT, that scans the retina and gives us layers of the retina. And the inner layer is called the ganglion cell or nerve fiber layer. And that layer becomes thin in glaucoma. And so that's another way of picking up glaucoma early from a structural perspective. Then we have functional tests like a field of vision test to look at the peripheral vision. There's sometimes electrical testing of the retina. Patients will tell us, look, I cannot see on this side, something is happening. So that's another functional problem. So that gives us some idea as well. New technology is basically around devices that take pictures of the eye and scan the eye. And then later we can talk about artificial intelligence, AI, and how that can be useful as well. Now, I have a Sorry, by question. the way, I just one more thing I wanted to emphasize is when we talk about new technology, there's also home-based monitoring that in the future I think will be useful, you know. But at the moment it's not there yet. But in the future, there will be a day where you can look inside the computer or your smartphone will be able to analyze your eye and the structure and the function, and also the technology that will help monitor pressure more continuously. Because right now, we just measure pressure once in the clinic, and then that helps us. But it's not enough. We need to know what is happening the rest of the day. Now, I have a question from our audience. How often should I have my eyes checked for glaucoma? I think I'll just start and then maybe Dr. Mayer can Doctor. add, but I would say it's important to get checked at least once a year if you are over age 40 or 45. If you are young and if you have risk factors, for example, if you have a family history of glaucoma or you have high myopia. Myopia is a condition where the eye can be long sometimes, and if the eyeball is long and the myopia is high, more than -4, -5 diopters, that puts you at risk. If you have diabetes, high blood pressure, thyroid disease, migraine headaches, all of these things put a person at risk. If you have had injury to your eye, that's also another risk factor. If you use steroids, cortisone, prednisone, that's another risk factor. So if you're doing those things, it's better to get checked straight away and then get checked more regularly depending on what the doctor says. So even young people, we usually advocate a good eye exam in school-age children, and then they don't need to be checked every year. But if some of these risk factors are there and somebody's gone blind in the family, for example, from glaucoma, it's better to get checked regularly at an earlier age. I also want to emphasize that this thing about steroids is a big problem. Dr. Mayer and I see cases, and I think you see cases where people go blind just because they're using some creams for their skin or tablets with prednisone or cortisone, or have allergy in the eye, and they put drops. They buy them over the counter, put the steroid drops. They don't realize 5-10% of the population, the pressure will go up and you can get glaucoma and go blind. So please, if you're using steroids, make sure you get your eyes checked within a few weeks and see, and make sure you're not a steroid responder, or don't use steroids until the doctor tells you. डॉक्टर मेहर, या सवाल है कि क्या मेरे दादा को ग्लूकोमा है, तो क्या इससे मेरे ग्लूकोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? ग्लूकोमा जो आम पब्लिक है, पॉपुलेशन है, उसमें 1 to 2% होता है। तो अगर 100 लोगों को देखें तो उसमें 1 से 2 को ग्लूकोमा होगा, दैट नॉर्मली। लेकिन अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, आपके वो रिश्तेदार जिनके साथ आपका खून का रिश्ता है, जैसे आपने कहा दादा या
पेरेंट्स हैं, आपके बहन भाई हैं, तो ये जो चांस है ये 10 गुना बढ़ जाता है। दुनिया में ऐसे ममालिक हैं लाइक यूनाइटेड किंगडम, जिसमें आप डॉक्टर के पास जाएं, ऑप्टिशियन के पास जाएं, उनको बताएं कि मुझे फैमिली हिस्ट्री है ग्लूकोमा की, वो आपको फ्री स्क्रीन करते हैं और उसके पैसे जो होते हैं वो गवर्नमेंट पे करती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन हम आपको एडवाइस करते हैं कि अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है तो कम से कम ऐसे, जैसे अभी प्रोफेसर दाम जी ने कहा कि आप अपनी आंखों का मुआयना ग्लूकोमा के हिसाब से अपने आई स्पेशल से कम साल में एक दफ़ा कराएं। और दूसरा ये कि क्या आपको डायग्नोस हो चुका है कि आपको ग्लूकोमा है, तो फिर आपका डॉक्टर बताएगा कितनी फ्रिक्वेंटली जो है वो आपको देख रहा है। तो इस हिसाब से जो है इट्स इम्पोर्टेंट कि आपको फैमिली हिस्ट्री के साथ अपने आंखों का मुआयना हर साल जरूर कराइए। और हाँ, दूसरी बात ये भी है कि नॉर्मली हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनके बच्चे 35-40 ईयर से ऊपर होते हैं, तो हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि सर आप अपने बच्चों को कहें कि वो अपनी आंखें चेक करा लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको अर्ली स्टेज पे डायग्नोज करें कि उनको ग्लूकोमा है, और सूनर वी मेड द डायग्नोसिस तो हम उनका अर्ली इलाज करके जो बीमारी है ना उसको रोक सकते हैं। ठीक है, बीमारी को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसका जो नुकसान है उसको होने से बचा सकते हैं। हाँ, मतलब ये वो कि अगर हमारे पास भी पेशेंट्स आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी ग्लूकोमा के हैं, तो हम उनको कहें कि अपने बच्चों का या अपने बहन भाइयों का भी मुआयना जी बिल्कुल, जी करवाएं, बिल्कुल, ताकि जो है वो हमें जी बिल्कुल। डायग्नोसिस में बिल्कुल। आसानी हो सके। अच्छा ना, वो हम जरा ट्रीटमेंट की तरफ आ रहे हैं, तो उसी सिलसिले में पहले से ही मेरे पास एक सवाल आया है ऑडियंस की तरफ से। ग्लूकोमा ग्लूकोमा का क्या इलाज है और कितना पेनफुल होता है? मतलब यूं कहने के, व्हाट आर द करंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर ग्लूकोमा पेशेंट्स एंड हाउ इफेक्टिव दे आर? तो इस पे डॉक्टर मेहर आप प्लीज लाइट डालें कि तो जो है वो क्या इलाज है ये और या तकलीफ बहुत ही है कि कॉमन नहीं? परसेप्शन है कि ग्लूकोमा जो है वो लाइलाज है। ऐसी बात नहीं है, ग्लूकोमा का इलाज है। हमारे पास मेडिसिन हैं, ड्रॉप्स हैं, हमारे पास लेजर्स हैं और हमारे पास सर्जरी है। हम देखते हैं कि आपकी जो डिजीज है ना वो कहाँ फिट होती है और क्या कर सकते हैं। अगर आपको अर्ली स्टेज है तो हम आपको दवाओं से इलाज कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ पे पेनफुल नहीं होती। इवन आपकी जो सर्जरी होती है ना वो भी पेनफुल नहीं होती, और इवन जो लेजर्स होते हैं वो भी पेनफुल नहीं होती। अभी जैसे प्रोफेसर दाम जी ने अर्ली कहा था कि आजकल हमारे पास नया लेजर आया है जिसको हम SLT या द प्रोसीजर जो है वो सिलेक्टिव लेजर ट्रबेक्युलोप्लास्टी है। तो नॉर्मली पहले हम आपको ड्रॉप से ट्रीट करते थे, लेकिन अगर आपको ओपन एंगल ग्लूकोमा है तो हम अगर आपको SLT करते हैं तो 80% पेशेंट जो है उससे आपका प्रेशर कम हो जाएगा, और ये 4 से 5 साल तक ये प्रेशर कम हो जाएगा। हम आपको हर साल देखते रहते हैं, ये नहीं है कि हम आपको लेजर करके कहेंगे घर जाइए अब आपको वापस नहीं आए। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि हम आपकी बीमारी को अरेस्ट करते हैं, हम आप बीमारी को रोकते हैं। ग्लूकोमा कभी खत्म नहीं होता, लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके हिसाब से ड्रॉप्स हैं, ड्रॉप्स जो है उनका फंक्शन होता है। कुछ ड्रॉप्स होते हैं जो एक दफा डालते हैं दिन में, वो 24 आवर्स आपको कवर करते हैं। कुछ ड्रॉप्स ऐसे होते हैं जो दिन में 2 दफा डालते हैं। और उम्मन लोग जो होते हैं, मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो ड्रॉप से कवर हो जाते हैं। अगर हम समझते हैं कि ड्रॉप से आप नहीं हो रहा, या आपकी जो डिजीज है वो बहुत एडवांस है, आपका जो प्रेशर है बहुत ज्यादा है और ड्रॉप्स उसको कवर नहीं करेंगे, तो हम आपको एडवाइस करते हैं कि हमारे पास मॉडर्न जितनी भी ग्लूकोमा की सर्जरीज है सारी अवेलेबल है, और हम आपको बताते हैं कि हम कौन सा प्रोसीजर आपकी आंख के लिए मौजूद है और हम क्या कर सकते हैं। Dr. Damji, for treatment, can you discuss any advancement or recent treatment options Yeah, I think and how one of effective they are? Okay. So there's a few advances in the medications. There's some new medications available, which are once a day, which open up the drainage channel inside the eye, or even the channels outside the eye. So those medications are not yet available in Pakistan, but they're available in other countries. And so people can look into them if necessary. However, some of those medications can also cause a lot of redness and irritation. So we generally start simple with a medication called a beta blocker, such as timolol, that can be given twice a day, or latanoprost, which can be given once a day at night, something simple like that. So those are still the best initial therapies if we're trying medications, in my mind at least. And then otherwise, laser treatment, SLT, selective laser trabeculoplasty, is new in Pakistan, and I think it's a very effective effective therapy. Lots of studies have actually shown us good results throughout the world. And I think even here, so far, when I've been using it, the results have been good. So I think that's a major advance as well. Then with surgery, we actually have
ability to do micro-invasive surgery. So instead of making a new drainage channel to bypass fluid, which is the traditional type of surgery called trabeculectomy, or we put a tube, different tubes in the eye. Instead of that, we can sometimes open the drainage system to improve the natural flow of the eye through micro-invasive glaucoma surgery using a bent needle or different techniques, a suture inside the eye, etc., that is pulled and opens up the drain, something called GAT, gonioscopy assisted transluminal trabeculotomy. So these are a little bit complicated terms, but basically, I think people need to know that, look, there are some traditional surgeries, some newer surgeries, newer medication, newer laser. In fact, another new laser that we will be getting soon is called micropulse laser. And instead of opening up the drain, it actually reduces the production of fluid. And it's also fairly safe to use. It's just that we have to learn more about how long these lasers last, but they can be repeated. And if people are not good at putting drops or too many side effects, or they want to reduce the number of medication, lasers like SLT or micropulse can be helpful in that aspect as well. Now, I will go back to the previous question. As you have discussed about the SLT and the surgery, the question was that ये पेनफुल प्रोसीजर्स होते हैं जैसे लेजर हो गया SLT? Yeah, right. So laser with SLT is not painful. Typically, there's a drop, numbing drop put on the eye. Then we put a special lens to keep the eye open. There's some light shining, and it's over in 2-3 minutes. And it's not really any pain. Occasionally, people may feel something. After laser, yes, they can have slight discomfort, but usually it settles within a few hours. And we use drops to help them with that discomfort. The other type of laser called micropulse, or the diode type laser, continuous wave, we have to put some freezing around the eye because that can be a little bit sore. But with the freezing, it's quite comfortable. So, we can keep the patient comfortable to do all these procedures. So I don't think people should worry about the pain with treatment. We have received a question that are there any special consideration for pregnant women with glaucoma? Dr. Mer? Okay, sorry. So प्रॉब्लम इज कि ये जो ड्रॉप्स वगैरह होते हैं ना, ये टेस्ट किए गए हैं ह्यूमन बींग्स पे, लेकिन जो लेडीज एक्सपेक्ट कर रही हैं जो प्रेग्नेंट है उसमें ये ड्रॉप्स नहीं किए हुए, तो हमें नहीं पता कि उनका साइड इफेक्ट क्या है, ठीक है ना. देयर आर एनिमल स्टडीज, देयर आर ह्यूमन स्टडीज, लेकिन ये प्रेग्नेंट लेडीज में नहीं यूज़ किए हुए. इस वजह से ड्रॉप्स जो होते हैं नॉर्मली वो हम अवॉइड करते हैं कि आपको न दें. जैसे आपका जो पहला ट्राइमेस्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कोशिश करते हैं कि आप उन्हें दें. एंड ये ड्रॉप्स जो हैं उनकी वेरियस कैटेगरीज हैं, हमें पता है कि कौन सा ड्रॉप किस ट्राइमेस्टर के लिए मौजूद है, तो एक तो ये करते हैं. और सबसे ज़्यादा जो है, जो अभी हम बात कर रहे थे SLT के या लेजर्स की, ये बहुत सेफ है क्योंकि ये इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है, इसमें आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाते या आपके बच्चे की तरफ जो है ये चीज़ें नहीं जाती, तो ये इस तरह से हम आपको कर सकते हैं. और फिर बेसिकली आल्सो हमें टाइम भी चाहिए कि आप 9-10 महीने आराम से गुजारें, और उसके बाद अगर कोई ट्रीटमेंट है, कोई और लेज़र है, कोई और सर्जरी है, तो वो कर सकते हैं. ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ग्लूकोमा है और आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आप जो है एक्सपेक्ट करेंगे अगले चंद महीनों में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर से बात करें, अपने ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट से बात करें और उनको बताएं कि आप ये करेंगी, तो हम पहले से आपकी जो मेडिसिन हैं उसको चेंज कर देते हैं और आपको बताते हैं कि आपके लिए सेफ्टी वाइज कौन सी दवाएं जो हैं वो बेहतर रहेंगी. Yeah, and just to add to that, there are some a group of medications called carbonic anhydrase inhibitors, right? And the tablet form of that is called acetazolamide or methazolamide, and the drop is called dorzolamide or brinzolamide. Now, those medications are likely not to be safe because in some animal studies they may affect the development, of the child. And others might be safe, but it's best to check with the doctor because what we try and do is avoid or reduce the medication, especially in the first trimester. And then if somebody's breastfeeding, there are different considerations as well, because sometimes medication can go through the breast milk, for the mother as well. And affect the child, yeah. I have a question that, is it true glaucoma surgery leads to blindness? So it's a very good question. And
People used to think that just doing surgery can cause blindness, but it's very rare. Alhamdulillah. I mean, with newer surgical techniques, with care, the chances of going blind are extremely rare, even if somebody has very reduced vision, like tunnel vision. And often, not doing surgery, there's a higher risk of going blind. If the pressure is high and you don't do surgery, then there's almost 100% chance you will go blind. Whereas if you do surgery, let's say that the risk of blindness is 1 in 200 or 1 in 300 from complication of surgery, that is a small risk compared to going blind when the pressure is very high if you don't do surgery. So under good surgeons' hands, alhamdulillah, the results are good, with trabeculectomy being the most common procedure, and then other types of procedures. And the risk of vision loss is very low, less than 1%. Minor complications, yes, you can get some bleeding, sometimes inflammation, infection, irritation, leak, things like that. But those can be fixed usually quite easily. Dr. Mayer, what's your experience? Yeah, I think मैं प्रोफेसर दाम जी जो कह रहा है उस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि अगर आपका प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, आप दवाएं डालते हैं लेकिन प्रेशर फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रहा, आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो इवेंचुअली आपकी विजन चली जाएगी। अब आपका क्या ख्याल है कि उस सूरत हाल में हम आपको छोड़ दें कि आपकी नज़र चली जाए? हम उस प्रेशर को कंट्रोल करना समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है, और मे भी उसमें थोड़ी सी चांस हो, लेकिन ये जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत ही कम चांस होती है, तो ये रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है कि हम उस प्रेशर के लिए आपको सर्जरी करें। और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट जो है सर्जरी के बहुत अच्छे हैं। हम पेशेंट से बात करते हैं, आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक तरफ आप इलाज नहीं कराएंगे तो क्या चांस होगी आपके ब्लाइंडनेस से, दूसरी तरफ अगर हम आपको ट्रीट करते हैं, सर्जरी करते हैं, तो उसके क्या चांसेस हैं, और पेशेंट को देते हैं कि ही थिंक्स अबाउट इट, शी थिंक्स अबाउट इट, और फिर डिसाइड करके हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डॉक्टर मेहर और डॉक्टर करीम जी, दोनों से आपकी मुझे राय चाहिए कि जो है क्या टाइम होना चाहिए जिस वक्त हम दवा बंद करेंगे और सर्जरी स्टार्ट करेंगे, कि भाई अब आपको सर्जरी की जरूरत है, अब मेडिसिन इतना इफेक्टिव नहीं है, तो वो क्या वक्त होना चाहिए जिस वक्त हम पेशेंट को सर्जरी का एडवाइस करें? I mean, see, for me, a lot of it depends on quality of life and also something called target pressure. So, depending on how much damage there is, we like to lower the pressure. If the damage is not very much, usually keeping the pressure in the teens, less than 18 millimeters of mercury, is reasonable as an initial goal. And then, if somebody has a lot of damage, very advanced damage, and very little vision to protect, usually we try and get the pressures into the low teens and sometimes even less than 12 or 13 millimeters of mercury. So there is that concept of controlling the pressure, but also the quality of life, because we don't want to do harm for the patient or cause too many side effects. So that's why it's important to discuss it and decide with the patient, if pressure is not controlled and with medication or laser, then usually we go to surgery. I don't like to offer surgery at the beginning unless the pressure is extremely high or the patient doesn't want any drops. I think most times we try medication. Then if it fails, not well controlled, we then go to surgery or laser. तो शौकत, आपकी बात को मैं प्रोफेसर दाम जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि हम आपकी दवाई नहीं रोकते। सपोज करें हम आपको मेडिसिन देते हैं और आपका प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, तो हम उसको बंद नहीं करेंगे। तो अब जिस दिन सर्जरी होती है आप तब तक ये दवाएं डालते हैं, और सर्जरी के बाद क्योंकि सर्जरी में जो चीज़ें हैं हम ड्रेन करते हैं आपके फ्लूइड को बाय वेरियस मीन्स, एक दफ़ा सर्जरी हो जाए तो फिर आपको ये दवाएं रोक देनी चाहिए, फिर हम बंद कर देते हैं और आपको दूसरे सेट की दवाएं होती हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स होते हैं, स्टीरॉयड होते हैं, जो आपको 6-8 हफ्ते के लिए देते हैं कि आपकी आंख जो है वो क्वाइट हो जाए। लेकिन दवाएं तब तक चलती हैं जब तक आपकी सर्जरी नहीं होती, क्योंकि दवाएं अगर बंद करेंगे तो आपका प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, और फिर सर्जरी करते वक्त फौरन अगर आप उसको कम करेंगे तो उसके लिए भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारी एडवाइस ये होती है कि प्लीज़ कंटिन्यू करें ये मेडिसिन, और हम सर्जरी करते हैं, सर्जरी के बाद ये दवाएं ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर मेहर, ये बताइए कि किस तरीके से जो है, क्योंकि ये आपने भी बताया, डॉक्टर करीम दाम जी ने बताया कि लाइफ लॉन्ग डिजीज है और इसमें हमें दवाएं मुस्तकिल ही डालनी है, तो इस तरह का क्या पेशेंट को बताया जाए, या पेशेंट को अभी जरा हम लाइव हैं समझाया जाए कि वो दवा को बिल्कुल पाबंदी से डालें, सीरियस रहें उसके बारे में, या यूं कह लें कि हाउ दे कैन एडहेयर टू द मेडिसिन एंड शौकत कंप्लायंस, में हाउ कैन वी इंप्रूव द कंप्लायंस?
मैं पेशेंट को बताता हूँ कि मैं ग्लूकोमा को कंपेयर करता हूँ डायबिटीज से। तो देखें, आपको शुगर है, डायबिटीज है, आप गोलियां खाते हैं, आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहती है, आप नहीं कंट्रोल में होती, आप इंसुलिन लेते हैं, डायबिटीज कंट्रोल रहती है, डायबिटीज जाती नहीं है। तो इसी तरह से ग्लूकोमा है, आप दवाएं डालते हैं वो कंट्रोल में रहती है, आप सर्जरी कराते हैं, आप लेजर कराते हैं, लेकिन डिजीज स्टेज। जब आपको ड्रॉप्स देते हैं तो एवरेजली हम आपको साल में 2 से 3 बार देखना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि आपका जो प्रेशर है वो कंट्रोल में है। बस क्योंकि डिजीज जो है वो सिम्टम लेस है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सिर्फ सबसे बड़ा मसला जो ग्लूकोमा का है वो ये है कि आपको कोई दर्द नहीं होता, आपको कोई तकलीफ नहीं होता। तो तकलीफ नहीं होती तो पेशेंट क्या करते हैं, वो दवाई डालेंगे, 2-3 महीने के बाद फिर कहेंगे मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, मैं दवाई बंद कर देता हूँ। एंड देन सडनली जब आपके पास आते हैं तो आपको लगता है ये तो प्रेशर ज्यादा है, तो आप उनको बताते हैं कि देखिए जी आपने दवा नहीं डालनी। तो दिस इज इट। तो हमने पहली बात, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पेशेंट को एजुकेट करें। हम पेशेंट को एजुकेट सिर्फ नहीं करते, हम उनकी पूरी फैमिलीज को बिठा के बताते हैं कि ये बीमारी नहीं जाने वाली और ये आपकी नज़र के लिए अच्छी नहीं है। तो देखिए कि ये दवाएं जो आपके वालदेन हैं या आपके बहन भाई हैं जो डाल रहे हैं, उसको कंटिन्यूसली डालना है, उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और ये दवाएं जो हैं आपको, उनके सिम्टम्स भी होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स भी होते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं इन दवाओं से तो हमसे आके बात करें, हम एक कंपाउंड को चेंज करके आपको दूसरे कंपाउंड पे डाल देंगे। क्योंकि दवाएं आपको कंटिन्यूस करना है तो हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि आप दवाओं से कंफर्टेबल रहें। And अच्छा। just another Yes. tip is that when we're putting the drops, try and time it with a habit, some brushing the teeth or setting your alarm clock so that it can become a habit of some kind. Also, after putting the drop, close your eyes for 2 minutes, and that helps to absorb inside the eye. Otherwise, if you put the drop and keep blinking, it will go onto the cheek or inside the nose and through the body. So it's better to just close the eyes gently. Some people suggest pushing on the side of the nose, called nasolacrimal occlusion, in order to keep the drop around the eye. So that's also another good practice, but it's a little bit hard for some people to find the soft spot there. So just closing your eyes 2 minutes is enough. If you're putting more than one drop, wait 5 minutes between the drops. Otherwise, one will wash out the other. So now I have a question. Do reading glasses worsen glaucoma, Dr. Danji? No, there's no worries about that. Thank you. Second question, glaucoma only affects the eyes, so it doesn't impact overall health, right? Yeah, it's a serious disease. It affects your whole life, and it affects it in different ways. So if you lose your side vision or central vision, you can trip and fall. You can have road traffic accidents. You have difficulty reading, working, difficulty at night, seeing properly. Your mood may also be affected. Some people go into low mood or sometimes depression, unfortunately, or become very fearful, anxious. So it can affect your mental health. So it has a lot of implications if people lose vision from glaucoma. But with good treatment, alhamdulillah, we can prevent vision loss in nearly everybody if they come early and are treated properly. Dr. Mayer, I think this is important to get your thoughts, but it is a major impact on quality of life. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि ग्लूकोमा आपकी जो फील्ड है उसको नैरो करता है। तो जब ये नैरो हो जाती है, सपोज करें आप गाड़ी चला रहे हैं, तो राइट साइड से या लेफ्ट साइड से जब गाड़ियाँ आती हैं, जब तक वो आपके सामने नहीं आएंगी आपको नजर ही नहीं आएंगी। तो आप एक्सीडेंट कर सकते हैं, आपको लगेगा ही नहीं, आप किसी को मार सकते हैं, कोई आपको आगे मारेगा आपको पता नहीं चलेगा। सी तो इस हिसाब से ये भी हम आपको बताते हैं कि आपकी जो विजुअल फील्ड है, आपका जो विजुअल स्टैंडर्ड है, ये कहाँ तक है। क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हैं तो वो आपको जल्दी मिल जाता है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा क्राइटेरिया, स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है। तो आपने अपना ख्याल खुद करना है और आपको पता होना चाहिए कि आपकी विजन जो है उस काबिल है कि आप गाड़ी चलाएं या गाड़ी नहीं चलाएं। आपको रात को घर से बाहर निकलते हैं, आप यू कैन ट्रिप ओवर। और अगर आप माशाल्लाह 60-70 साल की उम्र में हैं और कोई हड्डी वगैरह का प्रॉब्लम होता है तो आप लोगों को उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। तो दिस रीजन फैमिलीज हैव टू लुक आफ्टर ईच अदर। आपके वालिदैन हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है, तो बच्चों का फर्ज बनता है कि उनको ख्याल करें और उनको लुक आफ्टर करें। डॉक्टर महर, ये बताइए कि क्या सर्जरी कराने के लिए कोई एज लिमिट भी है सर्जरी के लिए? सॉरी, सर्जरी के लिए इज देयर एनी एज लिमिट फॉर सर्जरी?
नो, देयर इज नो एज लिमिट फॉर द सर्जरी। डिपेंड करता है कि आपको डिजीज किस एज पे हुई है, और कोई नहीं है सच, क्योंकि हमारी जो सर्जरी है हम लोकल एनेस्थीसिया में भी करते हैं और जनरल एनेस्थीसिया में भी करते हैं। जो पेशेंट जनरल एनेस्थीसिया के लिए फिट नहीं होते जी, हमारे पास खान में माशाल्लाह वी गॉट अमेजिंग डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया, तो हम उनको पास पेशेंट भेजते हैं। अगर कोई फिटनेस का इश्यू है तो वो सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से आपको कोई क्रॉनिक इलनेस है, कोई कार्डिक प्रॉब्लम है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, तो ये सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में भी हो सकती है। ठीक है, तो एज सच कोई भी एज लिमिट नहीं होती। अच्छा डॉक्टर करीम राम जी, हाउ डज लाइफस्टाइल, डाइट एंड अदर external factors impact the progress of glaucoma? It's an excellent question. You see, in addition to lowering pressure with medication, laser surgery, lifestyle can also help to lower pressure, improve blood flow, and help the functioning of the nerve. So, what are those lifestyle considerations, right? So, one is just to eat well, which means you have a good diet with fruits, vegetables. If you have antioxidants in your diet, so foods that are rich in vitamin C, vitamin E, other antioxidants. In Pakistan, we are blessed with so many good fruits and vegetables. So examples would be like citrus, fruits, oranges, or if you like anar, or vegetables which are green and leafy, dark colored basically, or bright colored fruits and vegetables are the best ones. Then exercise can help. Now, here we have to be careful. So, if you're doing aerobic, walking fast or swimming, cycling, that's no problem. But if you are holding your breath and lifting, heavy things to do exercise, and there can be some uh, adverse effect on the eye. The pressure can actually go up if you're holding your breath and squeezing your chest. The eye pressure actually goes up. So one has to be careful. If one is doing yoga, then generally breathing yoga is fine. But if you are holding your breath or turning upside down, that causes the eye pressure to go up. If you are interested in mindfulness or meditation, there are some good studies, randomized control studies that show benefit of mindfulness or meditation to actually lower pressure and improve the glaucoma. So that's another good strategy as well. Dr. Meher, how can healthcare providers better support patients in coping with the challenge of living with glaucoma? Or I can say with Dr. तो हेल्थ also प्रोवाइडर highlight. Yes. हेल्थ प्रोवाइडर के लिए ये नहीं है कि हमने डायग्नोज करके पेशेंट को ट्रीटमेंट में डाला है। इट्स इम्पोर्टेंट कि हम उनको बताएं कि आपकी जो बीमारी है ना वो है क्या। मरीज के लिए देखें, हमारा जो अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट जो आते हैं हमारे पास, या पाकिस्तानी लोग जो हैं वो इवन पढ़े लिखे नहीं होते। ठीक है ना, जो पढ़ा लिखा तबका है हम तुमको समझा सकते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ता उनको भी हम समझाना जो है हमारा फर्ज है। हमने उनको डिजीज के बारे में बताना है कि ये वो डिजीज है जिसका अगर आप इलाज नहीं करेंगे तो दिस विल लीड टू ब्लाइंडनेस, तो आपकी बीनाई जो है वो चली जाती है। और इसी हिसाब से मैंने पहले भी कहा कि हम सिर्फ मरीज से डिस्कस नहीं करते, हमने उनकी फैमिली मेम्बर को भी बुला के बातचीत करते हैं। बहुत सारे लोग अभी तक हमारे जो है जॉइंट फैमिलीज पे रहते हैं, तो अगर आपके वालिदैन हैं जिनको प्रॉब्लम है तो हम बच्चों को बुलाते हैं। अगर आपके वालिदैन हैं जिनको आर्थराइटिस है, वो अपनी आंख में दवा नहीं डाल सकते, तो हम उनको बताते हैं कि ये दवा नहीं डाल सकते। या कभी कभी हमने इनको पेशेंट को कहा है कि जी आप दवा खुद डालते हैं, वो कहते हैं जी। मैंने कहा कि मेरे सामने डाल के दिखाएं। और बच्चे नोटिस करते हैं कि जब वालिदैन दवाएं डालते हैं तो दवाएं आंखों के बजाय बाहर जाती है। तो इस सूरत हाल में पेशेंट मुझे कहता है कि जी मैं दवा डालता हूँ लेकिन आई का प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, तो उनकी जो टेक्निक है वो सही नहीं होती। इस वजह से हमने सबके सामने बैठ के फिर हम टेक्निक को इम्प्रूव करते हैं, हमको बताते हैं कि आपने क्या करना है। और अभी प्रोफेसर दाम जी ने कहा कि जब आप एक ड्रॉप डालते हैं तो आप 1 मिनट के लिए आंख बंद कर दें, तो वो आंख के अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है। और या कभी कभी यहाँ से प्रेस करें तो आपके सिस्टम में नहीं जाता, क्योंकि ये ड्रॉप्स आपके नाक में जाते हैं, नेजल म्यूकोजा उनको एब्सॉर्ब करके आपके बॉडी में भेजती है। और इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है जी, सपोज करें ड्रॉप्स हैं जिनको बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं, अगर आपके सिस्टम में वो जाएं तो आपका ब्लड प्रेशर कम कर देते हैं। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर पहले ही कम है और ये ड्रॉप्स डालते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर और कम हो जाएगा, और आप मे बी यू कैन फील डिजी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो देर टेक्निक्स होती हैं ड्रॉप्स डालने की जो हम आपको समझाते हैं। और ये ड्रॉप्स नाक में मुंह में जाते हैं तो आपको उसकी मेटालिक टेस्ट मिलती है। वो कहते हैं जी मेरे गले में जो है ना
खराश होती है, मैं जब ये दवा डालता हूँ या डालती हूँ, तो आपने बताना है कि कैसे प्रिवेंट करें कि ये मेडिसिन आपके मुंह में या थ्रोट में न जाए। तो जरूरी है कि हम आपको डिजीज के बारे में, हमारे पास हॉस्पिटल में पैम्फलेट्स हैं, हमारे पास ब्रोशर्स हैं ग्लोकोमा के बारे में, जो हम आपको देते हैं। आजकल तो देखें, लाइक आसान है, आप यूट्यूब पे जाएं, आप सोशल मीडिया पे जाएं और उनको बताएं ग्लूकोमा क्या होता है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले। आपने सिर्फ एफर्ट करना है कि आपको अपनी डिजीज के बारे में पता होना चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपका डॉक्टर क्या कर रहा है। और कंप्लायंस बड़ा इश्यू है हमारे यहाँ। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि चूंकि बीमारी में कोई सिम्टम्स नहीं होते, तो बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं उसके भी बहुत सारे वजूहत हैं, फाइनेंशियल रीजंस हैं, दवाएं कुछ महंगी भी मिलती है। उसके लिए हमारे पास जो डोमेस्टिक जो बनती हैं दवाएं, हम उनको आगे लाना चाहते हैं कि उनमें से बहुत दवाएं अच्छी दवाएं हैं, तो वो इफेक्टिव हैं, तो चाहते हैं कि वो डालें, क्योंकि इससे आपकी कास्ट कम हो जाएंगी। और तो कंप्लायंस इज अ बिग इशू इन ग्लूकोमा, और ये क्रॉनिक डिजीज है। आपने सारी जिंदगी, अगर आप 50 ईयर्स में आपको ये डिजीज डायग्नोस हुई है, तो हमें पता है कि आप माशाल्लाह अगले 30 साल तक जिंदा रहेंगे। तो 30 साल तक अगर आपने पैसे खर्च करने हैं, ये दवाएं डालनी है। और ग्लूकोमा सिर्फ नहीं होता, जैसे ओल्ड एज में आपको शुगर होती है, आपको ब्लड प्रेशर होता है, आपको आर्थराइटिस होती है, सो सी जो बिल होता है ना फाइनेंसिस का, वो बढ़ता ही रहता है। तो इस हिसाब से हम आपको चाहते हैं कि हम आपको ऐसी दवाएं दें जो आपके लाइफस्टाइल के साथ सूट करें। और दवा डालना जरूरी है, और आप हमेशा अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि कोई मेडिसिन है, उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं। एंड वी आर वेरी हैप्पी टू ऑलवेज टॉक टू यू। Yeah, and I think the doctors can let you know if you need or would benefit from more support, like magnification devices, lighting, prevention of falls, maybe holding a cane or a walker would be good, avoiding driving if you have advanced glaucoma, things like that. So, otherwise, if it's in the early stages, we just try and customize it. And if the patients are doing fine, then we don't worry too much. And obviously, family and friends and so on, loved ones can support. But otherwise, the doctor can give you some suggestions on how to support your well-being holistically, not only just the vision part. Dr. Karim, I have a शौकत, इसमें question. मैं ऐड करना चाहूंगा कि हमारे जी, जी. हॉस्पिटल में वी हैव गॉट फाइनेंशियल प्रोग्राम्स, जहाँ पे हम पेशेंट अगर सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं ट्रीटमेंट में, लेजर्स में, सर्जरी में, द हॉस्पिटल इज देयर टू हेल्प। हमारे पास काउंसलर्स हैं जो हम कहते हैं कि आपसे मुलाकात करें, और वी वांट टू हेल्प इन एनी वे, कि आपको जो ये प्रॉब्लम है ना, उसको किसी तरह से हम उसको सॉल्व करें। Yeah, same baat, yeah. I have a question for both of you. Is prolonged sajda or ruku will increase the pressure? High So, pressure. yeah, so I was explaining, and maybe I'll just explain in a little bit more detail. See, the fluid that is made in the eye, it drains out and then it drains and comes down to the heart. Now, there's no valves in these veins, okay? So when your pressure goes up in your chest, it does temporarily cause the eye pressure to go up a little bit. In some people, a lot. So if you have early glaucoma, it's not a problem. If you have very advanced glaucoma, or you have had some surgery, then doing the sajda puts a little bit of pressure sometimes on the chest and increases the eye pressure. So the doctor can advise you about this, whether it is safe or not. In majority of patients, alhamdulillah, should be no problem. Okay. What do you think, Dr. Mary? या आई थिंक आई एग्री विद डॉक्टर करीम। फिर मैं उसी तरफ आ जाता हूँ कि अपने डॉक्टर से बात करें। हम आपको जो आपकी जो लाइफ स्टाइल है, हम उसके बारे में आपसे डिस्कस कर सकते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए। व्हाट एवर योर एक्टिविटीज इन, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप योगा करते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आप वेट लिफ्ट करते हैं। वी आर हैप्पी टू डिस्कस एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल, और हम आपको बताते हैं क्या चीज़ है जिससे आपको फायदा है, क्या चीज़ है जिससे आपको नुकसान हो सकता है। Yeah, and we want people, of course, to live life to the fullest, the best they can, to enjoy life and not to restrict life. But sometimes there are restrictions, so we can advise, yeah. I have a question. My father is taking two medicine to lower the pressure of eyes. What is the next step to improve further the pressure, to decrease the pressure? करीम, Already, Sometimes, yeah. sometimes we add 3 medications, 4 medications, but it's too much sometimes for the patient to put so many bottles. It might create some redness, irritation, side effects in the throat or other problems. So at some point, it's better to offer patients laser treatment to lower the pressure or think about surgery, right? To lower the pressure. And we talked about
different types of surgeries that open the natural system of the eye, so-called microinvasive surgeries, or surgeries that bypass the system, so-called trabeculectomy or tube surgeries. So there's a lot of choices, but more and more medication can help, but sometimes it's too much for the patient. And then, we can advise other. So we try and customize it to what is best for the patient, discuss options. Dr. Meher, are there any technological innovation or digital health solutions for the betterment or for the better control of the glaucoma? Well, see, बेसिकली जो अभी तक कंट्रोल के लिए वो चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं, डिजिटली तो कुछ नहीं है, लेकिन एडवांसमेंट ये है कि जैसे हम आपका प्रेशर जो है हॉस्पिटल में आके चेक करते हैं, और वो 4 महीने में एक दफ़ा, 6 महीने में एक दफ़ा, साल में 2 दफ़ा, लेकिन अभी होम हेल्प है कि आप अपना प्रेशर खुद चेक करें और डिफरेंट टाइप्स पे चेक करें, क्योंकि होता ये है कि ये जो प्रेशर है ना, उसका कर्व होता है, वी कॉल इट डायनल रिदम, कि वो आपकी जो बॉडी में कॉर्टिसोल बनता है ना, उसके साथ ऊपर नीचे रहता है। तो हमने देखना ये हुआ है कि जब आप हॉस्पिटल में आते हैं, आर वी लुकिंग एट द हाईएस्ट पीक और द लोवेस्ट पीक, तो अगर आप घर में उसको 2-3 दफा चेक करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आपका प्रेशर जो है वो कितना स्टेबल है इन 24 आवर्स। लेकिन ये चीज़ें कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं जो आप अपनी आंखों पे लगाएं, तो वो आपका प्रेशर चेक करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें यूरोप में, अमेरिका में तो जो है दस्तयाब है, और हमारे पास जो है वो अभी तक ये चीज़ें नहीं आई। वी होपिंग कि वन डे these medicine these investigations will come here। दवाएं हैं आजकल, जो है एक दवा है जो रात को आप डालते हैं, अब उसके लिए क्या हुआ है कि छोटे से पैलेट्स होते हैं कि हम आपके आंख के अंदर डाल देते हैं, जो वो दवा जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं, ये पैलेट जब आपके आंख के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं तो वो दीज आर स्लो रिलीजिंग कैप्सूल्स, जो अगले 4 से 6 महीने तक आपके प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होराइजन पे हैं, ये मिलती हैं, ये यूरोप में हैं। अगेन पाकिस्तान में भी इज अ फाइनेंशियल रीजन दैट हमारे पास ये चीज़ें नहीं आती, क्योंकि दे आर वेरी एक्सपेंसिव, और हमारा जो आम आदमी है ना वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। Yeah, I think how do you see technology shaping the future of the related question? Yeah, it's a related question. And I think that the role of technology is very exciting when it comes to eye care, because technology can be utilized to educate people. See, a lot of people are not aware of what glaucoma is, how often they get the eyes checked, and so on. So we can educate through mobile devices or other, methods, using digital methods, and increase the chances that the person is aware of the importance of the disease, knows how often they need to check. It would be nice to have an app, right, for eye health, for example. And then technology can help with the diagnosis in some cases, because if you take a picture of the eye, of the retina, AI can interpret that now with pretty good accuracy and tell you if you have any diabetic eye disease, glaucoma, macular degeneration, and so on. So that day is soon here. It's already here in many parts of the world, and we are testing some technologies even in Pakistan in different settings to try and utilize AI with pictures of the eye, and similarly with other diagnostic images. For example, all the information from the FOV, the field of vision, or the OCT, a lot of data that AI will be able to help us integrate and put together so that we know what the structure, the function is, and what's happening. Is there any change over time? Because in glaucoma, you want to see, is there change with these devices before the patient notices it? If the patient notices change, it's usually happening more rapidly, more serious. So I think, and home healthcare was mentioned, so many different opportunities with technology that are coming, inshallah. Dr. Salim Meher, I can ask you, what are the research is going on to new medicines, or for new treatment options, or for like stem cells, or like any advancement? शौकत, मैंने पहले जैसे अर्ज किया ना कि हमारे पास जो दवाएं हैं, अभी छोटे से इम्प्लांट्स आ जाते हैं, आपकी आंख में डाल दें, 6 महीने तक आपका प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। तो ये एडवांसमेंट है। हमारे यहाँ फॉर ईस्ट में, सिंगापुर में ये दवा, ये चीज़ जो है इलाज अवेलेबल है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, लेकिन अभी तक यहाँ पे नहीं आया। इसी तरह से माइक्रो सर्जरीज हैं, बहुत सारे इम्प्लांट्स ऐसे आ गए हैं। हम नॉर्मली जो ट्रिबलेक्टमी करते हैं, वो ट्रेडिशनल ग्लूकोमा सर्जरी, जिसमें फ्लूइड को जो है बाहर ड्रेन करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास छोटे छोटे इम्प्लांट्स आते हैं जो आपके आंख के अंदर डाल देते हैं, जो फ्लूइड को बाहर निकाल के ले जाते हैं।
कॉस्ट इज द इशू। इनकी जो प्राइस है ना वो हमारे आम आदमी के लिए जो है अफोर्डेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इस वजह से जो है बहुत सारे डीलर्स जो होते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी से उसको यहाँ पे लाती नहीं है। लेजर सभी आप जैसे रिसेंटली जो स्टडीज हो रही थी उसमें यह आया कि अगर आपको एसएलटी करते हैं तो आपका प्रेशर जो है अगले 4 से 5 साल तक कंट्रोल में रहेगा। और तो ये दिस इज अल्दो एसएलटी हैज बीन देयर फॉर सम टाइम, लेकिन उस पर इतना काम नहीं हुआ था, उतने इस पर रिसर्च नहीं हुई थी। अब जब हमें पता चलता है कि ये हुआ तो हम जैसे हमारे पास अभी ये हॉस्पिटल में आ गया है तो वी आर गोइंग टू ऑफर, एक्चुअली वी हैव स्टार्टेड डूइंग द दिस प्रोसीजर। वी डन प्रोफेसर दरीद दाम जी हैज डन ऑन फ्यू पेशेंट्स, आई हैव डन ऑन फ्यू पेशेंट के इससे आपके ड्रॉप से जान छूट जाती है। और एक दवा लेजर करा लें अब तो आपको देखते रहते हैं और उसकी जरूरत होती है तो हम इसको रिपीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। तो सर्जरी में है ड्रॉप्स, बहुत सारे और भी हैं ड्रॉप्स जो आप एक दफा डाल दें नहीं आती। कुछ ड्रॉप्स ऐसे हैं लेकिन अभी ऐसी कॉम्बिनेशंस भी मिल रही हैं जो एक दफा डाल दें तो प्रेशर आपका 30 to 40% कम हो जाता है। सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग और इंशाल्लाह वी फील दैट एक दफा फाइनेंशियल पोजीशन हमारे मुल्क की अच्छी हो जाए, ठीक है, तो ये चीजें यहाँ बयास इंशाल्लाह की हम जो है मैसर हो उम्मीद जाएगी। कर सकते सो हैं वी जी। ऑफ कोर्स वी ऑलवेज लिव इन होप। अब हमारे पास असल में अब टाइम कम रह गया है, तो आई वांट इन द एंड कि डॉक्टर करीम दाम जी काइंडली प्लीज गिव योर फाइनल स्टेटमेंट अबाउट द ग्लूकोमा इन 1 to 2 minutes प्लीज, एंड देन डॉक्टर मेहर यू विल। Thank you. The glaucoma, or I should say glaucomas, are a diverse group of diseases that can affect any age, but especially near birth or soon after birth or in adults. And if you are concerned, it is better to just have your eyes checked. As a habit, it is better to have your eyes checked every year after age 40 or 45. And if there's risk factors for glaucoma, family history, high myopia, if you have diabetes, high blood pressure, thyroid disease, you should be checked more frequently, and the doctor will advise you. There are newer therapies available to lower pressure and prevent blindness, so it can be treated and managed. We have new research. We have recently hired a stem cell researcher at Aga Khan University, Dr. Irfan Khan, that is helping us come up with stem cell therapies, inshallah. So in time, we will have some new therapies as well. It's an exciting time in glaucoma management and diagnosis. Thank you. तो डॉक्टर करीम दाम ने मैसेज दिया है, आई जस्ट विल सेकंड इट। अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो प्लीज़ अपने आई स्पेशलिस्ट से मुलाकात करें और उसको बताएं कि वो आपकी आई का प्रेशर चेक करें, आपकी आंख में पीछे जो रगे हैं, ऑप्टिक नर्व है, आपकी रेटिना को एग्जामिन करें और देखें कि आपको ग्लूकोमा नहीं है। अगर आपको किसी किस्म की फैमिली हिस्ट्री है ग्लूकोमा की तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि आप अपने आंखों को चेक कराइए। आप ग्लासेस पहनते हैं, साल में एक दफ़ा चेक कराना ज़रूरी है। आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज है, क्योंकि ये जो है ना ये आपके ग्लूकोमा के लिए इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं, ये बीमारी को बढ़ाते हैं। तो आप उनको चेक कराइए, अपनी सेहत का ख्याल करें। वी वांट यू टू लिव लॉन्गर, वी वांट यू टू लिव हैप्पी लाइफ। ओके, Inshallah. इंशाल्लाह। Thank you very much, Dr. Karim Damji and Dr. Professor Salim Meher Saab for highlighting many aspects of glaucoma. आपने ग्लोकोमा के बारे में हमें बहुत अच्छी जो है गुफ्तगू दी और हमें पता चला कि ग्लोकोमा जो है वो पैदाइश से भी हो सकता है, एज के किसी हिस्से में भी हो सकता है, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद उसका चांस ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमें उसके बाद 40 के बाद अपना मुआयना कराना ज़रूरी है। इसी तरीके से एक बात और सामने आई कि अगर आपकी फैमिली में किसी को ग्लोकोमा चल रहा है तो आप अपने अरीब करीब के लोगों का भी ज़रूर मुआयना करवाइए। और एक चैलेंज जो अमूमन देखने में आया है और जो डिस्कस भी हुआ कि दवाओं की पाबंदी नहीं रहती है या दवाओं की पाबंदी होती है लेकिन उसके बावजूद दवा आंख में नहीं गिर रही होती, तो उसका भी हम सब ने बहुत ख्याल रखना है ताकि इस बीमारी को हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंट्रोल में कर सकें। और दुआ भी करते हैं और कोशिश भी हो रही है कि इसमें रिसर्च हो और कोई ऐसा सिलसिला निकल आए कि इस बीमारी का हम इलाज दरियाफ्त कर लें। लेकिन जब तक बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं होता, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने डॉक्टर से जो भी उसके हमें राय मिलती है उस पर अमल करें और पूरी ईमानदारी के साथ दवाओं का इस्तेमाल करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। नज़र है तो सब कुछ है, नज़र नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, क्योंकि बहुत सारी अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं लेकिन उनमें नेमतों में आंख बहुत बड़ी नेमत है, इसका बहुत ख्याल कीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। Thank you.